Hey guys, so welcome back to my channel Foodie Space. आज कोई रेसिपी नहीं, Hangouts Cafe. You can just have a look and इसका डायरेक्शन मैं आपको लिंक में ज़रूर दे दूँगी. Other than that मैं आपको ये बता दूँ and this location is कमलगाछी and इसके सामने ईडी इंस्टीट्यूट, उसके ऑपोजिट से एक रास्ता है and this is your location. I'll put a link of Google Map जहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो. यू आर इन रूबी, डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत कैफ़ेज मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको 4-in-1 कैफ़े मिलेगा जहाँ पर आप रेस्टोरेंट के साथ साथ बुटीक, अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू आर म्यूज़िक लवर देन आप गिटार प्ले कर सकते हो. उसके साथ आप इवेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर डेट्स एंड टाइम. एंड इफ़ यू आर अ बुक रीडर देन डेफिनेटली दिस इज़ योर प्लेस. आपको बंगाली बुक्स के साथ इंग्लिश बुक्स भी मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड यू कैन एंजॉय विद अ कॉफ़ी और विद योर फेवरेट स्नैक्स. So mask is on and let's get inside. So we are at the cafe and let's explore the ambience. Also रेस्टोरेंट में आ चुके हैं. अभी खाना पीने से पहले वी कैन डेफिनेटली एंजॉय द एम्बियंस एंड आई एम लिटिल बिट अट्रैक्टेड टू म्यूजिक. मुझे गाना बजाना तो आता नहीं, बट यस दैट्स माय अट्रैक्शन. सो लेट्स गो. सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होगा. अदर देन दैट इफ यू नो हाउ टू प्ले गिटार or violin then you can definitely try it. At least maybe you have noticed the board outside is food, adda, books and fashion. I know मेरे चैनल पे खाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. So उससे पहले let's get into fashion. That is इनके पास इनका एक छोटा सा and unique boutique है. So let's explore that. Cooking stuffs and this is fish shaped chopping board. Just look at it. I am fond of cooking, so I love this section a lot. Might get attracted with some of your favorite stuff, so do visit. This is earring section. You can definitely get something for puja or for any of your outfits. These are really adorable. Also they have this साड़ी and suit pieces section. You can see. ये मैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं शो करा पाऊँगी, but these are the sections. You can have a look. And यहाँ पे neck pieces and earrings, necklace sets सब आपको available है. So you can definitely come and have a look. तो अभी चलते हैं food and books की तरफ. So let's get to book section. Few collections जो यहाँ पे available है. Like looking for Alaska and I will definitely read this with a cold coffee. Yes. Cold coffee. Hey guys, so finally food has arrived. और यहाँ पर बहुत कुछ है. I'm telling you literally, I'm just craving for it. So starting with, I have Caesar salad, soup. This is creamy chocolate
cold coffee. It is chicken ala kaki, jalapeno cheese pops. I'm starting with salad. और इस सैलेड में मीन्स इफ यू आर समवन जिसको कैफे भी जाना है पर हेल्दी भी खाना है देन डेफिनेटली दिस इज योर मतलब मस्ट ट्राई मेन्यू. सो इट हैज चिकन, olives, lettuce, lots of cheese and croutons. Croutons are really crispy. So सीजर सैलाड में सबसे डिलीशियस जो मुझे लग रही है काफी सिंपल. यू आर मीन्स दिस इज रियली लाइट डिश विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस. सो दिस इज अ फ्लेवर, चीजी फ्लेवर. नाउ कम्स सूप ऑफ कोर्स. दिस इज माचो टोर्टेला कॉर्न सूप. ডিপ করে দিল এটা. So this soup has bell peppers, tortillas, then corn, sweet corn and tomato tanginess. मतलब this can be your best healthy options. Caesar and corn soup. I mean Caesar salad and corn soup. You can definitely try if you are health conscious. And if you are someone जिसको चिकन बहुत पसंद है, then here goes chicken harisha kebab, and I am a chicken lover, so definitely this is a must go for me. Really tasty. Now let's go for chicken alakia. Okay. नाम में थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई विल डेफिनेटली ट्राई इट. This is also super light, super healthy, and this is boiled chicken जो फ्राइड किया गया है एंड इसके बेस में आपको पोटैटो मिलेगा एंड सम मेयोनीज. सो यू कैन गो फॉर इट. एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन डोंट वरी, आपके लिए भी है jalapeno cheese poppers. This mayo is tangy और ये this is filled with paneer and vegetables and cheese, filled with cheese, lots of cheese. This is really tangy, but if you are veg, definitely this is your go for it. And lastly, I have, of course, creamy cold coffee, and this is really delicious. If you want to read a book and chill out, then go with cold coffee and a book of your choice. So what I liked about this cafe is you have lots of time if you want to spend here. You can read books, you can shop like sarees, clothes. In fact, kitchen items, you have a lot of options there. And if you are a music lover, then yes, you can enjoy music along with food. So let me talk about hygiene. As we know, COVID has really affected our lifestyles, but here hygiene is fully maintained. Thermochat, yes. Sanitization, yes. Also there is a sanitizer on each and every table. Food hygiene, of course, you can just see how clean and how presentable the food items are. I loved it a lot. Ambience, yes, it was amazing. Food, it was really, really tasteworthy, and they cook it fresh. They might be थोड़ा time लेते हैं, but yes, they cook it fresh. Let me enjoy this food. This is sizzling brownie with ice cream.
chocolate sauce and a scoop of vanilla ice cream that is loaded with lots of dry fruits, walnuts, cashews, raisins. Look, this is like awesome. Every bite you will get walnut or cashews. So delicious. So I love the food a lot. I'm telling you, here the food is really fulfilling, and all the descriptions will be given below in the description. Also, you can check my Instagram. You can also check my Facebook. Stay connected with Foodie Space with lots of delicious updates. And अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe, like and share. See you next time.